Hello friends, welcome to Skillshot's Basic Knowledge Portal. I will be sharing with you in a series of videos some fundamental knowledge about finance. Our first topic is share market. We all have heard of this term quite often, but कभी अच्छे से मतलब नहीं पता चलता अपने को. So today I am going to break it down to you. In today's video I am going to answer 3 basic questions about share market. Number 1, what is share market? होता क्या है? Number 2, purpose of share market or why it came into existence. And number 3, how can we trade in share market and what is the process of trading in these markets. तो ये 3 बेसिक क्वेश्चंस के मैं आंसर करने वाला हूं आज की वीडियो. Our first question is, what is share markets? Before understanding share markets, let us first understand what is market. तो market क्या होता है? Market is a place where buyers and sellers meet to trade in certain products and services. Similarly, share market is a place where buyers and sellers meet to trade in financial products. Alright? One of which is equity shares. तो एक particular financial product हो गया equity shares. The purpose of trading may either be speculation or hedging और आर्बिट्राज. मैंने भी 3 टर्मिनोलॉजी शेयर की आपके साथ जिनका मतलब आपको एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी क्लियर नहीं हो रहा होगा इतना, बट मैं एक बार कोशिश करता हूं कि एक बेसिक आइडिया दे पाऊं आपको. स्पेकुलेशन मीन्स बाइंग समथिंग इन ऑर्डर टू रीसेल इट एट अ हायर प्राइस इन फ्यूचर, जो कि हम लोग नॉर्मल जो ट्रेडिंग का बात करते हैं वो स्पेकुलेशन में ही फॉल करता है. द सेकेंड इज हेजिंग. हेजिंग मीन्स प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ अगेंस्ट अ फ्यूचर प्रोबेबल लॉस ड्यू टू सम करंट एक्सपोजर. तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे सपोज यू आर एन एक्सपोर्टिंग कंपनी एंड यू आर एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू यूएसए एंड से आपको 6 महीने बाद आपको $20,000 रिसीव होने वाले हैं फ्रॉम दैट यूएस कंपनी. सो यू आर अफ्रेड कि यार जब तक वो $20,000 मेरे को मिलेगा उस समय तक एक्सचेंज रेट इतना नीचे ना चला जाए कि जब मैं उसको कन्वर्ट कराऊं तो मेरे को एक्सचेंज में लॉस आ जाए ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन करेंसी. तो उस लॉस से बचने के लिए जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स मैं बाई करूंगा और उस पर्पस के लिए जब मैं बाई करूंगा तो उस पर्पस को हम लोग हेजिंग बोलते हैं. एंड द लास्ट इज आर्बिट्राज. आर्बिट्राज इज बेसिकली नो इन्वेस्टमेंट नो रिस्क प्रॉफिट. इसके बारे में मैं आपसे और आगे डिस्कस करने वाला हूं. इस वीडियो में खाली इतना ही बेसिक रहने देते हैं इसको. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्पस ऑफ शेयर मार्केट और व्हाई इट केम इनटू एग्जिस्टेंस. सो द पर्पस ऑफ शेयर मार्केट is to connect investors with businesses directly. Very important term, directly. तो मैंने यहाँ पर 2 लोगों का जिक्र किया है. The first one is investors and the second is businessmen. Investors are people who have savings and they want to grow their money. Businesses are entities that need money to grow and become more profitable. Right? Let's first understand what incentives does an investor have to invest in equity shares. Higher after tax return on investment. तो मैंने यहाँ पर 2 टर्मिनोलॉजीज यूज किए हैं. एक है आफ्टर टैक्स और एक है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिकली मीन्स जो भी आप कमाते हो ना, whenever you purchase a share price and you sell it at a higher price, ये जो गेन होता है इसको हम लोग कैपिटल गेन्स बोलते हैं. और कंपनीज आपको डिविडेंड अनाउंस करती है तो दीज आर ऑल्सो इनकम्स. तो जो भी आपको इनकम हो रहा है फ्रॉम इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग, इसको हम लोग कैपिटल गेन्स और डिविडेंड्स में बाइफरकेट कर सकते हैं और इस पे हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है. तो ऑब्वियसली वी आर नॉट कंसर्न्ड विद बिफोर टैक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. टैक्स पे करने के बाद मेरे घर पे कितना बच रहा है मेरे को उस चीज से मतलब है. सो हायर आफ्टर टैक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. एज इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स of a company represents a certain percentage ownership in the company. It basically allows an investor to directly participate in the growth of the company. Okay, now let us understand this concept with the help of an example. The concept is how an investor can directly participate in the growth of a company by investing in the equity shares of the company. So say you invest rupees 50,000 in the equity shares of Reliance Industries at a current share price of rupees 1000 per share. ठीक है, 50,000 रुपया 1000 per share के हिसाब से. So you are entitled to 50 shares of the company. And say the company does good business and reports high growth, due to which the demand for the shares of the company rises in the market, and now
The value of Reliance Industries is rupees 1200 per share in 1 year's time, साल भर के अंदर. ठीक है. So what just happened? You see कि क्योंकि आपने उस ग्रोथ पे पैसा लगाया था और जब कंपनी ने वो ग्रोथ अचीव किया तो उसका हिस्सा आपको भी मिला है. Because you had 50 shares of the company and now the share price is 1200, so your 50,000 investment is now worth rupees 60,000, and you also earned a 20% return on your investment, right? This is how you can participate directly in the growth of the company by investing in equity shares. Versus if you invest your money in banks, you get a fixed rate of return, say 7% on fixed deposits. Banks in turn further loans out your money to these companies, say at the rate 13%, and this is basically the revenue model of bank. If you look closely, this is an indirect investment in the company with the help of a financial intermediary, which is bank. You can very well imagine, if company is raising money at the rate 13%, it is obviously expecting itself to grow at a rate higher than 13%, say 20%. Otherwise, how will the company repay the bank? So if you invest directly in the company by way of equity shares, you might earn a return of 20% instead of 7%, which you got while investing with the bank. And thus an investor can grow his money by giving it to those who can more efficiently utilize the money to earn more money. Right? इस तरह से आप अपना पैसा को grow करा सकते हो by giving it to someone who can better manage the money and earn a better return on that money. Right? Now let us understand what incentives does companies and businesses have in raising money through issue of shares. Companies have no legal obligation to make a fixed payout to its shareholders for the money raised. Versus companies have an obligation to pay a fixed rate of interest when they raise funds via bank loans or debentures. Debentures are also debt instruments. So it is better for them to raise money through शेयर इशू बिकॉज उस केस में उन लोग को एक फिक्स्ड पे आउट देने का जो ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन है, वो उन पे नहीं आ रहा है. दे आर एबल टू फ्रीली री इन्वेस्ट द मनी इन देयर ओन बिजनेस फॉर देयर फर्दर ग्रोथ. ओके, सो आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन लेट्स नाउ सम अप दिस सेक्शन कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ शेयर मार्केट. इट इज एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज टू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस. तो मैंने बहुत सारा टर्मिनोलॉजी यूज किया, उसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. What is scarce resources? Scarce resources are resources which are not available in abundance, but they are available in a limited quantity. Just like land, labor and capital. ये आपको abundance में नहीं available है, limited quantity में available है. Unlike air which is available in abundance, we all are breathing, right? So ये जितने भी resources हैं, उनका efficient utilization, यही economy का purpose रहता है. तो शेयर मार्केट में क्या, कौन सा रिसोर्स का हम लोग बात कर रहे हैं? हम लोग कैपिटल का बात कर रहे हैं, मनी का बात कर रहे हैं, विच इज ऑब्वियसली अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी. अनलिमिटेड पैसा तो है नहीं, तो जो पैसा है उसका मोस्ट प्रोडक्टिव यूज होना चाहिए. दिस इज द पर्पज ऑफ शेयर मार्केट. एज इन आवर एग्जाम्पल वी हैड डिस्कस्ड कि अगर आप चूज करते हो टू इन्वेस्ट इन बैंक्स, यू कैन अर्न अ रिटर्न ऑफ से 7%. बट यही अगर आप चूज करते टू इन्वेस्ट दैट मनी डायरेक्टली इन शेयर मार्केट, in that case you would have been able to earn a higher return, say 20%. So ये जो आपका पैसा एक आपको 7% कमा के दे रहा है, दूसरा आपको 20% कमा के दे रहा है, तो उस पैसे का यूटिलाइजेशन, क्योंकि अब शेयर मार्केट के आने से मैं 20% ग्रोथ में लगा सकता हूँ. दिस वॉज द पर्पज ना, कि मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में मैं वो पैसा इन्वेस्ट कर पाऊँ. राइट, सो दिस वॉज द पर्पज ऑफ शेयर मार्केट. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो. What is the process of trading in share markets? कि अपने कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं शेयर मार्केट्स में. So trading in share market is an online process. It is not anymore a physical market like a vegetable market where you can go and buy stuff. Whenever you buy shares, you pay money to the seller. But what do you get in return? You get share certificates. Earlier, you used to get these share certificates in physical form. But nowadays, you get these share certificates in digital form, or as we commonly say in demat form, right? For trading to take place online, we have a number of participants who facilitate in the process for smooth and fraudless trading experience. It's not flawless.
it's fraudless, right? The first participant being the stock exchanges. It is a place or platform where the companies who wants to raise capital from the public list itself. You can imagine stock exchanges to be like Amazon and Flipkart platforms, which links buyers and sellers for the purpose of trading, even when they do not know each other. Since they do not know each other, they cannot trust each other. But they both means the buyer and the seller. They both trust the platform, which is either Amazon or stock exchanges in our case. Okay. The next participant that I am talking about are brokers. Unlike in Amazon and Flipkart, in share markets you cannot directly purchase and sell shares, as you need a license to do that. Brokers are licensed entities with whose help you can purchase and sell shares. Brokers usually charge a small fee called brokerage fees or transaction cost for the services that they are providing, the trading services that they are providing. उसके लिए वो लोग एक छोटा सा कमीशन चार्ज करते हैं जिसको हम लोग ब्रोकरेज फीस या ट्रांजैक्शन कॉस्ट बोलते हैं. You can compare this scenario with booking train tickets through travel agents, or while you're going abroad, you are converting rupees into dollars with the help of a foreign exchange dealer, right? That foreign exchange dealer is the broker, and that travel agent is the broker that I'm talking about, so you can relate to that. Okay, so the third participant that I'm talking about are custodians. Custodians hold money and shares on behalf of their clients. Since shares are held in demat form, so you also need to have a demat account, right? These services are provided by the broker itself. तो कुछ examples ले लेते हैं brokers के, like Edelweiss, you have Angel Broking and etc. These are brokers. They provide both the trading services and the custodial services as well, right? The fourth and the last participant that I am talking about are banks. You obviously require a bank account in order to facilitate the transfer of money to and from your broker when you buy and sell shares. So imagine a situation where you have an account with the broker and you have sold some shares. तो डायरेक्टली पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता, पहले वो ब्रोकर के पास रहता है, बिकॉज ब्रोकर इज अ कस्टोडियन, राइट? मैंने डिस्कस किया था कि कस्टोडियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है ब्रोकर्स. दे होल्ड मनी एंड शेयर्स ऑन योर बिहाफ. तो पैसा वो ब्रोकर के पास पड़ा हुआ है, तो वो ट्रांसफर कैसे करेगा आपके बैंक अकाउंट में? जब आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा ना विद द ब्रोकर. So bank accounts are obviously a very important, banks again are the most important participants in order to facilitate this trading process, right? The fifth and the last participant that I'm talking about are regulators. SEBI, the Securities and Exchange Board of India, is a regulatory body whose role is to oversee the functioning of share markets in order to protect the interest of investors and prevent fraud. तो आपने सुना होगा द हर्षद मेहता स्कैम, द सत्यम स्कैम. ये सारे स्कैम्स के बाद सेबी ने अपने लॉज एंड रेगुलेशंस को और एनफोर्सिबल बना दिया है और उसको स्ट्रिक्ट बना दिया है ताकि ऐसा और कोई भी स्कैम पॉसिबल ना हो, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज without proper enforceable regulations, investors will have no trust in the markets, and if they will not trust the markets, they will not invest their hard-earned money. So regulators play a very, very important role in the functioning and in the trading process of the share markets, right? Thank you guys for watching this video. I hope you enjoyed it and learned something new today. Don't forget to share this video with your friends and family to make them and also you become financially literate. Thank you so much.